Namaste and very hearty welcome to all of you to this very first session of Prem Bodh. Before we start this session with the prayers by Guru Ma, let me tell you a little bit of background. In December 2016, I had a vibrational meeting with Babaji. And that is the time where the knowledge of Prem Kriya, Prem Dhyan, and Prem Bodh came. So Prem Kriya I have taught in 2-3 different ways, which is also taught as divine intoxication kriya. It's also taught as urdhvaretas kriya. There are 3 ways of it, okay, which I am teaching. And prem dhyan, the essence of that is loving attention, which we have already learned. Most of you have learned. Prem bodh I have never talked about. So few days back, twice at night, I had this, more or less messages coming in that I have not completed my mission given by Babaji. And again, that urgency was felt in a big way. And that's why, with a very short notice, we started this additional classes. These classes will be every Sunday morning, 8 o'clock, according to India time. Okay. We may miss one or two because we'll be traveling. We'll inform you in advance. Or we may do one day early or one day late, whichever way possible that we will decide. So few Sunday mornings will be missing, or Saturday evenings here where I'm sitting, San Francisco. The whole knowledge is difficult to deliver. I want to tell you before we start with the prayer. Why? Because vibrational meetings with Babaji are so high power and such a short duration, a very high level of knowledge comes. This is how always the meetings are. And unzipping those files in my own consciousness and verbalizing is a very challenging task. But with the blessings of Babaji, over a period of time, slowly, the knowledge of Prem Bodh will start coming. And we need the grace of the masters because there are certain things, certain knowledge which is beyond communication, beyond words. That's how it is received. So how we will put it into the words? How will I convey? How will I communicate it to you? There's a big challenge there. But with the grace of the masters, everything becomes possible. So we need to invite the grace, and for that we will all do the prayers. Okay, me and Guruma are sitting in the same room, so there may be echo. What I will do is I will switch off my microphone and give it to Guru. Namaste and heartiest welcome to you all. So happy to see you all after a long gap and really feeling the reunion with the whole family again. So, very joyous feeling, and that too for a session of Prem Bodh. Master's grace is amazing. How they create the energy and how they push you into it so that the whole thing starts manifesting wonderfully. The vibrations which are coming are demanding this state of love. And that is where this urgency that Guruji was mentioning is coming, appearing. So let us first pray to Masters for every time taking care, guiding, nurturing on the path. Such is the compassion and love of the Masters that whatever is needed for us at the right time, that is served to us in silver platter. So with lot of gratitude in the heart, we pray to the Masters. Our Moksha Guru, revered Himalayan Yogi, immortal Himalayan Yogi, Sri Mahavatar Babaji, and all the masters of Guru Mandala. We bow down to them and seek their blessings by offering the prayers of Guru Vandana at their lotus feet.
Let us first chant Om 3 times and create a field of oneness from where we can connect to the Masters. Become aware of your breath. As you breathe in, go to the top of the head and look within. Now connect to the heart. Heart is the seat of love and gratitude. Let us pray from the bottom of the heart to the Masters. We will chant Om. Take a deep, relaxed breath. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री सद्गुरवे नमः। So, praying to the Masters and getting into the flow of their grace, receiving their blessings, we will start the session. What a beautiful tool of prayers Masters have given us. Within few seconds, we get connected to them with the prayers. The surrender happens from within, the love arises, the gratitude. We get into the state of gratitude and set into that state once the prayers are over. So, with these prayers now, we will get into our session. The session today is about Prema Bodha. Today, this is the launching session or the introductory session of Prem Bodha. Most of you have learnt Prem Kriya and Prem Dhyan. And you all know that when we say Kriya Yoga, essentially there are three components. First is for enhancement of energy, we do Kriya, that is breathing. Then, normally whatever people call as Kriya. Kriya is the whole process. But when we say Kriya, the first is breathing process where the energy gets enhanced. And we come into the rhythmic flow of breath. The second stage is then we get into dhyana, because as the vibratory stage goes higher up, naturally the thoughts they slow down, and slowly the thoughts
no longer linger into that field. They cannot linger into that field. So the field of oneness is created. There is no thought of other. There's only one. So this Prem Kriya for enhancement of vibrations, vibratory level, increasing our PEF, then the Dhyana, with that coming into the state of thoughtless zone, coming into the thoughtless zone. And after that, why do we get into Dhyan? Many people do Kriya Dhyan, but then they don't know what all this is about. So then the awareness of during that dhyana, masters are releasing the highest knowledge of creation to you. And that happens in the state of awareness. So kriya, dhyan, and then bodha. And that bodha, when it happens, why it is called as bodha, is when that understanding happens, it happens at the experiential level. It's not just intellectual understanding. It's the experiential understanding which transforms our life. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बोध. एक बार बोध हो गया ना तो दूसरे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Nobody else will have to come and tell you that this is right and that is wrong. Naturally that state of awareness awakens within. So that is why these three components are necessary. Now initially only Guruji created a preamble by telling that how this prema marga came to him when he was in Bengaluru, how suddenly with a thrust this prem marga was given to him by Babaji by appearing in at a level of vibratory state. So Babaji appeared there and he gave all this understanding. But this highest vibrations, when they come, they need time to set. So what happens is, to manifest, it takes its own physical time. And that is where now today we have reached to a state where Prem Bodha, we all are ready for Prem Bodha. We have practiced Kriya enough, we have practiced Dhyan enough, and all the radiant faces are telling, all the loving, smiling faces are telling that yes, Babaji, we are ready. Masters enjoy that, when this state comes and they're giving that highest knowledge. But are we absorbing? Are we really transforming our life? Only when the real transformation happens and we come into that state where we start enjoying life, where we start enjoying that state of oneness, and we don't get deviated from, come back oneness again and again. So when that is happening, that is the time when masters bless us with the higher things. So today we are again here now for higher knowledge of Prem Bodha. It is not knowledge, it is the understanding. It is the awareness, understanding with awareness that goes on flowing during the session of Bodha. So, heartiest welcome to you all in this session of Prem Bodha. Guruji for last 3-4 days, anytime he would get up in the night, anytime he would sit, start taking notes, because the urgency which was felt, you all must be seeing that there is all chaos around us. But in that chaos, how we are as if we are on an island where masters are beautifully keeping them on their farm and taking care of us. That's the kind of state they put us into. So why this is happening is, those who are implementing all these things, they are naturally taken care of. And you feel others who are in chaos, oh, they also can be invited to have this state. Why should they suffer? Why the misery should be there in life? There can be a state which they also can enjoy, and that is where sharing of this knowledge becomes an urgency. So now Guruji is ready with all the components which are necessary for launching this third state of Prem Bodha. Prem Kriya, you all have experienced the effect. Some of you are learning, experiencing it now. Prem Dhyana has happened. The state of loving attention simply sets in and the love oozes out. Love cannot be cultivated, it cannot be created. It is there inside, it simply starts oozing out when we get absorbed into that
state of oneness. So, from that state of oneness, let us all get into the session for receiving further knowledge from Guruji. So, heartiest welcome to Guruji for giving whatever Babaji has delivered to him and that understanding which is waiting to come to us. Welcome, Guruji. Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Very hearty welcome to all of you to this first session of Prem Bodh. Prem, roughly translated in English, is love because we don't have any other word. And love is the most misunderstood, most corrupted word in English because it's used for many things. But we don't have any other word in English parallel to that. So, okay, Prem is love and Bodh is understanding with awareness. That is how I will define both. Both is understanding. That understanding is higher understanding with awareness. Without understanding, both cannot happen. Without awareness, both cannot happen. So both has both components. Higher understanding with awareness. That is how we will translate the word both. So I will describe little bit more detail my meeting with Babaji. Many meetings happened. First meeting happened in July 2000. Early morning, around 4:30 or so. That time I was at our home in Thane, Silver Arch Residence. And Babaji gave the full knowledge of Kriya Yoga. Okay. And that is the time when I received 49 healing breath Kriya. So next 2-3 days I was practicing and then I understood the whole thing, started teaching. So teaching Kriya was not a problem. The knowledge was given very systematically, which I had punched in computer. And after that, many meetings happened. Lot many Kriyas came to me. So good time to upgrade the Kriya Yoga, modern Kriya Yoga. Okay. So roughly 30 Kriyas, all the masters should learn, upgrade themselves with new Kriyas. But along with that, when this meeting in December 2016, Babaji appeared vibrationally in Divya golden body. See, meeting means there's no human form there. Okay, you should understand how Babaji transfer the knowledge. It's not the human form. You can see more or less like energy body is there. So the form is felt. महसूस होता है, दिखता नहीं है. मुझे दिखता भी है क्योंकि मुझे वो एस्ट्रल विजन है. और कम्युनिकेशन माइंड टू माइंड होता है, बट इट इज नॉट थॉट लेवल, इट इज वाइब्रेशनल लेवल, सो हायर देन द थॉट. जैसे कि बहुत सारा एनर्जी फाइल्स है, वो भी जिप्ड है, फिर वो एक एक फाइल खुलता है, एनर्जी बाहर आती है, उसको शब्दों में ढालना बड़ा मुश्किल होता है. डिफिकल्ट टू वर्बलाइज दोज एनर्जी फाइल्स विच आर बेसिकली द कोडेड knowledge. To say it knowledge is also wrong, coded wisdom, higher level of understanding. So somehow that was not happening, but now it's happening. There was a special message which I have not mentioned to anybody. I am opening it up. What happened in December 2016 at Bengaluru, and I was sleeping in a hotel room. Okay, because I was to conduct some classes on the weekend. And it was in a hotel room. That's where I experienced this meeting, and some amazing things happened. All of you are experiencing the outcome of Urdhvaretas Kriya, divine intoxication Kriya. You practice it even with the videos, you'll get the same results. Prem marg, loving attention, extraordinary things came to me. Okay. All that happened in that small meeting, vibrational meeting, In a very small time, lot of knowledge came. And managing that becomes difficult because the human body, human frame, human mind is limited. So Babaji's knowledge is infinite.
a small portion of that comes, even that becomes difficult to manage, and verbalizing all the more difficult. But there was a message which I will share with you, that world will need this knowledge. Okay. Practice Prem Kriya for 1000 days and the knowledge will flower in you. Seriously, I had been practicing that Kriya more than 1000 days before the COVID-19 happened. And then in COVID-19, we started teaching online, and there were two batches. Many of you were there. You learned Urdu Ritas Kriya. Okay. Then Prem Dhyan also was taught, many batches of initiation into Prem Marg. Very special initiation, many of you have received that. That is to be given personally only. And Prem Bodh I never shared because it did not come into verbal format. It was understood and assimilated in the consciousness. But to bring it out in the verbal format was very difficult, and it is difficult. You will understand. Okay. So, with the blessings of the masters, now we have started one thing. In that meeting, Babaji had said that there will be emergency on the planet Earth, and people will need this knowledge. So, you prepare yourself. So, preparation was going on, and what I had understood vibrationally, when will the emergency come? Okay, and Sanket, the understanding that came was when Saturn enters the Pisces. Okay. So Saturn entered Pisces. शनि मीन राशि में प्रवेश किया 29 मार्च 2025 को. ओके, अब ये 2016 में मुझे नहीं मालूम था. Nor was I teaching astrology at that time. I knew astrology, but I was not teaching astrology. So on a regular basis, I was not tracking. Number one. Number two, षडग्र युति का पता हमको 2016 में नहीं था. That became popular much later. ये 1-2 साल पहले पॉपुलर हुआ. So षडग्र युति इसी दिन को होने वाली थी, मुझे मालूम नहीं था. What kind of emergency will be there? I had no idea in 2016 when I received that knowledge. But very faithfully, whatever Babaji's orders were there, I have followed, understood, assimilated the knowledge. Today I understand the emergency. Okay. We are sitting on that volcano which can blast off any time. That emergency, now I understand. See what all things happen. So Saturn shifted to Pisces on 29th March with 6 more planets. So 7 planets conjunction happened. Recently, 7th June to 28th July. Okay, today is 26th here, yours is 27. So one more day to go. Mars and Ketu conjunction happened. Since 7th June, I have got about 17 calls. 17 मैसेजेस या तो फोन कॉल मुझे आए और लोगों ने बताया जो मेरे क्लाइंट्स है. आई डू लॉट ऑफ कपल काउंसलिंग, यू नो, फॉर ऑलमोस्ट 3 decades आई हैड बीन डूइंग. गुरुजी अर्जेंट नीड चाहिए, हाथों पाई की मारामारी हो गई हमारे बीच में. ऐसे काफी सारे मैसेजेस आए मुझे. वर्बल तू मैंने तो होता है, इट्स नॉर्मल, दैट नोबडी इवन बॉदर. हाथों पाई की मारामारी हो गई. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट मंगल केतु, मार्स केतु कंजंक्शन. ओके, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक योग. So it's influencing depending on your horoscope. That's why the emergency. शनि मंगल षडाष्टक योग साथ साथ ये भी सब चल रहा है. तो जब भी शनि मंगल षडाष्टक होते हैं तो इट डैमेजेस द रिलेशनशिप. ओके, अब और एक बात ऐड हो गई. सिंस 13th जुलाई सैटर्न हैज गॉन रिट्रोग्रेड, which means all our past life karmas will emerge in a big way. Whatever issues we are supposed to suffer or complete. वक्री शनि पुराने लोचे को कंप्लीट करने में भी मदद करता है.
मतलब कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो हम लोग 138 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू फोकस ऑन इट, बिकॉज retrograde Saturn helps us to complete our past birth karmas. And that 138 days started from 13th of July and it will continue up to 28th of November 2025. So perfect time for us to improve our relationship. For whatever reason it's not working, it's a past life karma. Retrograde Saturn is an ideal time to complete and improve our relationships. You understand why the emergency has come? Right in the perfect time. See, why did I launch Urdhva Kriya so rapidly? Because we wanted to teach people during that Mars Ketu conjunction at the ideal time. Okay, with Saturn retrograde going from 13th July, today is what, 26th July. So much of pressure coming in, so much of emergency felt because of the planetary positions. Now, the plus point of it, Jupiter Venus conjunction, ideal for improving husband wife relationship. In Vedic astrology, Jupiter is husband and Venus is wife. When Jupiter and Venus conjuncting in the Gemini राशि, मिथुन राशि में, द्विस्वभाव का है राशि ऑफ कम्युनिकेशन। जो इतने सालों से अपने को जो कम्युनिकेशन मुश्किल लगता था वो अब आसान हो जाए। गुरुदेव कम्युनिकेशन की राशि में, शुक्राचार्य भी कंसल्टेंट है, गुरु भी कंसल्टेंट है, टीचर है, दोनों टीचर है, दोनों आचार्य है। और कम्युनिकेशन की साइन में बुद्ध की साइन, बुद्ध गवर्न्स, मर्क्यूरी गवर्न्स कम्युनिकेशन। और दैट इज फ्रॉम 26 जुलाई टू 21 अगस्त, बहुत कम टाइम है अपने पास। 26 जुलाई, आज मेरा लैपटॉप 26 जुलाई दिखा रहा है, इंडिया में आपको 27 जुलाई दिखाएगा, परफेक्ट टाइम पे शुरू हो। ओके, जुपिटर Venus conjunction is the right time for communication, difficult communication. Now, when will the emergency occur? Emergency will occur anytime after 7th of September 2025. What is 7th September? It's a lunar eclipse. Purnima है 7th September 2025 को, and there is a lunar eclipse, चंद्र ग्रहण है। और बराबर 15 दिन के बाद में अमावस्या को 21 सितंबर को सोलर एक्लिप्स है। नाउ दिस टू एक्लिप्सेस के बीच में मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो बाबा जी का दिया हुआ ज्ञान मैं आपको बताता हूं। एस्ट्रोलॉजी तो मैं ऐड किया कि मैं आपको बता सकूं, बात कैसे करूं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 सितंबर के बाद में डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारे कपल्स को तकलीफ होगी और बहुत सारे डाइवर्सेस होंगे, डाइवर्स रेट बहुत बढ़ जाएगा। अब ये मानना है, हम तो प्रेयर करते हैं बाबा जी से कि न हो मास लेवल पे, क्योंकि तकलीफें आना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मैसेजेस आए हैं ऑलरेडी। ओके, ये जो डेट्स है वो मेरा रिसर्च है, लेकिन जो वाइब्रेशनल मैसेज है वो यही था कि ये इमरजेंसी है और ये इमरजेंसी को काउंटर करने के लिए प्रेम मार्ग का जो रास्ता है वो सबसे ज्यादा अक्सर इलाज। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स केतु कंजंक्शन कैन बी वेरी एक्सप्लोजिव, क्योंकि विस्फोटक योग है, हाथों पाई की मारामारी हो सकती है कपल्स के बीच में, बट अगर वही ऊर्ध्वरेतस क्रिया प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस ऊर्ध्वरेतस क्रिया। वैसे अभी का जो टाइम हो, अगर हम कुछ बातें प्रैक्टिस करते हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, with those practices lots of our issues will be solved and we will be able to learn and grow in a very big way, because एक क्राइसिस सिचुएशन में है, तो जो क्राइसिस सिचुएशन में ढंग से सीखेंगे, सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। क्यों?
क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन एकदम परफेक्ट है, बट प्लैनेटरी पोजीशन में इश्यूज भी है। जो लोग नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। कितना समय है? 26 जुलाई टू 21 अगस्त, एक भी दिन वेस्टेज किए बिना हमने ये शुरू कर दिया। ये पीरियड में अगर हम लोग सीख लेंगे तो 7 सितंबर टू 21 सितंबर के बीच में जो क्राइसिस सिचुएशन आने वाला है, देयर विल बी मेजर क्राइसिस इन रिलेशनशिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब हो रहा है नहीं हो रहा है इसका मैं परफेक्ट अंदाजा लेने के लिए कुछ फिगर्स मैंने निकाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं, बिकॉज इट गेटिंग रिकॉर्डेड। और फिर हम अक्टूबर के बाद में फिर से ये फिगर्स निकालेंगे, तो अपने को समझेगा कि क्या हुआ है। ओके, कि मैंने लेटेस्ट फिगर्स निकाले हैं जो मैं आपको बताता हूं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड इट साइंटिफिकली। ओके, so whether whatever we are thinking or discussing as such a large group from Prem Sangha, okay, the scientific aspect also has to be there, so we understand that we are tracking it on the right manner, and if any corrections are required we will do that. Okay, अभी अभी मैंने कुछ डेटा निकाला है, कंट्री वाइज भी निकाला है मैंने और इंडिया का स्टेट वाइज निकाला है। ओके, कंट्री वाइज पहले बताता हूं। Divorce rate of India is lowest in the world. Lowest in the world. Right now it is 1%. Highest divorce rate is in Portugal, and that is more than 91%. Okay. See, more than 50% में कौन कौन है? फ्रांस है 51%, बेल्जियम 53%, फिनलैंड 55%, यूक्रेन 70%, रशिया 73%, Luxembourg 79%, Spain 85%, and Portugal 91%. India 1%. This is a world statistics by a very standard agency. Okay, this is what I got now. So India is very, very safe, 1%. Okay, but it was 0.5%. It has doubled already. In all my earlier lectures, I have told you 0.5%. ये लेटेस्ट डेटा है, इंडिया का 1% हो गया है। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। ओके, फिर भी इफ यू सी द स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है अभी भी। सो बिलो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नीचे के लोग जो है उसमें डाइवोर्सेस ज्यादा नहीं होते। डाइवोर्स ज्यादा होते अपर 5% रिच लोगों में ज्यादा होते हैं। अफ्लुएंट सोसाइटी में डाइवोर्स ज्यादा होता है। सो एवरेज, ओके, ये फाइनेंस वाइज नहीं है, एवरेज महाराष्ट्र का डाइवोर्स रेट हाईएस्ट है 18.7%। ऑल इंडिया 1%, महाराष्ट्र 18.7%, कर्नाटका 11.7%, सेकंड हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश 8.8, वेस्ट बंगाल 8.2, दिल्ली 7.7, तमिलनाडु 7.1, तेलंगाना 6.7, बाकी सब लोग नीचे है। नागालैंड सबसे कम है, लेस देन 1%। These are the latest figures of divorce rates. Okay, overall Maharashtra 18.7%. मुंबई का वेरिएबल है 30% to 40%, which is the highest in India right now. Just little below 30% is Bangalore. Okay, so sometimes Bangalore is higher or sometimes Mumbai is higher. Overall, Mumbai is higher this time. In 2016, also in one of the workshop in Bangalore, I had told about it. That time Bangalore was higher. It was 23% Bangalore, and Bombay was 16% that time in 2016. Okay, now Bombay is higher. Why am I telling you this figure? Because we will actually understand with the figures whether this planetary position, as I have understood, is actually true or not. So we have noted down the figures and we will compare it again. Okay. Now, so the urgency is felt because of the need, and the planets are talking about it. The data is showing something is going wrong.
what I was wondering that why this knowledge is required, the knowledge about radiant relationships. I want to ask all of you, okay? All of you are educated, okay? 80% members of On-Prem Sangha are postgraduate, which means all the audience that I'm addressing to, 80% members are very well educated, okay? And all of you have gone to school and college. How many years? 10 plus 2 plus 4 plus those many years. 10 standard SSC plus 2 is HSC plus 4, 3 or 4 or 5, whatever the graduation, plus 2 is your post graduation. Those many years. Okay. I want to ask you one question. Did any one of you learn in school or college how to manage your relationship, especially relationship with your spouse? Please raise your hand. Zoom on, नीचे है ना raise hand, zoom hand है, उसको क्लिक करो अगर आपने सीखा है तो, नहीं सीखा है तो मत करना. ओके, आई डोंट सी एनी जूम एंड राइजिंग. अगर जूम एंड राइज होता है तो आगे आ जाता है वो वीडियो. ओके, इफ द कम्युनिकेशन इज क्लियर, व्हाट आई अंडरस्टैंड is none of us learned in school or college how to manage our relationship, which is a major chunk of our life. All of you got it? This subject is something which we have never learned in school and college. Okay, one more question I want to ask you. You are all educated people. Did any one of you learn in school or college how to choose your life partner? शादी कैसे करने का, किससे करने का? Okay. Did any one of you learn that? Nobody. और यहाँ पर करीब करीब सभी स्टेट से लोग हैं. यूपी से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से बहुत है, गुजरात से है, ओके, कलकत्ता से है, बहुत सारे लोग हैं. This is all India crowd is there and few from abroad. So it proves that none of us learn how to choose a life partner. Most of those who do not believe in destiny, after marriage, they start believing in destiny. My survey shows that after the marriage, at least 5 years of married life, when people start believing in destiny, नसीब जैसा कुछ है, बोलते हैं हाँ, समझता है अभी हमको नसीब जैसी कोई बात है. Why? Because of few agendas that soul carries. Now listen carefully. अब प्रेम बोध शुरू हो रहा है. ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना था आपको समझ में आए. अब प्रेम बोध शुरू होता है. हर आत्मा, every soul comes with certain agenda. The set of parents that you are born to is purely by your destiny, and your destiny is based on your past life karma. आपके कर्मों के आधीन आपको बचपन में कैसा माहौल मिलेगा, पेरेंट्स रिच होंगे कि मिडिल क्लास होंगे कि पुअर होंगे, आपके आसपास का माहौल कैसा होगा, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. यू गॉट इट बाय योर डेस्टिनी एंड यू कैन नॉट चेंज दैट. यू आर born out of your parents. You are carrying your parents' DNA. That is 100% destiny. I'm telling you few agendas that a soul has. So this is the first agenda. Second agenda, you cannot change your siblings. आपको जो भी भाई बहन मिले हैं वो भी नसीब से मिले हैं, और जो आपके जेनेटिक ब्रदर और सिस्टर है उसको आप बदल नहीं सकते. आपको जो बचपन में माहौल मिला, आप जो स्कूल में गए, पिकल,
ओके, और जो भी सीखने को हुआ वो भी आपका डेस्टिनी था, आपकी चॉइस नहीं थी, आपको तो कुछ मालूम भी नहीं था तभी तो। माँ बाप ने जो स्कूल में डाला तो वहां पर गए। डेस्टिनी, स्कूल इज अ डेस्टिनी। सबसे मजेदार बात आती है, आप ध्यान से सुन, प्रेम बोध का पहला झटका लगेगा आपको। आपको लगता है आपका लाइफ पार्टनर आपने चूज किया है। सी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ लव मैरिज वाले हैं, ये सिलेक्टेड योर लव, लव मैरिज वाले लोग, ऐसा भ्रम पैदा होता है कि हमने सिलेक्ट किया। लेट मी टेल यू, 4-5 साल अगर हो गए आपकी शादी को तो आपको समझ गया कि आपका लव मैरिज भी आपका डेस्टिनी था, है ना। जिसको नहीं समझ रहा तो थोड़ा रुको, आपका शादी अभी अभी हुआ है, एक 5-7 साल जाएगा तो आपको बराबर ये बात समझ में आएगी कि आपका लव मैरिज भी आपका डेस्टिनी से ही हुआ, आपकी चॉइस से नहीं हुआ। ये सोल के एजेंडा में आया। ओके, उसके बाद में आपके घर में बच्चा कैसा आया, आपका बच्चा, वो भी आपका डेस्टिनी है। और आपके बच्चे आपकी ओल्ड एज में आपका केयर रखेंगे कि नहीं, आपके साथ में होंगे कि नहीं, ये भी आपका डेस्टिनी। अब मुझे बताओ कि स्टार्ट टू एंड मैंने बता दिया, अभी आपका एजुकेशन, आपका फ्री विल, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी चॉइसेस कहां पर काम आई? मेजर इवेंट्स में तो नहीं आई। इवन माइनर इवेंट्स, यू सी, मैं जब इंजीनियरिंग में गया फर्स्ट ईयर कॉमन था, माय चॉइस वाज मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट टाइम, बट आई गॉट 1 मार्क लेस एंड आई हैड नो ऑप्शन बट टू गो इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा तो इंजीनियरिंग भी नसीब के हिसाब से चला, मेरी चॉइस तो वहां पर भी नहीं थी। एजुकेशन अपने को लगता है द ब्रांच दैट यू हैव चोजन इज ऑल्सो बाय डेस्टिनी। So all the major events, if you see in your life, are going by the destiny, नियति। नियति तत्व है ना एक, इसमें शैविज्म के टेबल में शुद्ध अशुद्ध तत्वों में आता है वो, एंड दैट नियति तत्व इज वर्किंग हेवीली ऑन अस। तो जैसे इंडिविजुअल की एक डेस्टिनी होती है, नियति होती है, वैसे एक फैमिली की भी नियति होती है, हर रिलेशनशिप की एक नियति होती है, डेस्टिनी ऑफ अ रिलेशनशिप। दो जन साथ में आएंगे, वो रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है ये भी रिटर्न है। हर फैमिली की डेस्टिनी होती है, न्यूक्लियर फैमिली, और हर जॉइंट फैमिली की भी डेस्टिनी होती है। वैसे हर प्रांत की, हर स्टेट की, हर राष्ट्र की और दुनिया की भी डेस्टिनी होती है। सो वी आर ऑल गवर्न बाय सो मेनी फोर्सेस। Now if this is so, and if you are realizing the truth of what I am talking about, okay, those who are married for more than 7 years by now, I'm sure you must be realizing the truth of it. Those who are unmarried or just recently married, you are having your honeymoon, then what I'm talking about may be little difficult for you to digest. You will digest over a period of time. If you understand in a right perspective, then this is the biggest trap for all of us. तो भैया जो है वो है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम कुछ कर सकते। प्रेम बोध का जो एसेंस है वो हमारे हजार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
वो बोध अगर हमें हो जाए तो हम मुक्त हो जाए। किससे? हमारे कर्मों से, हमारी डेस्टिनी से मुक्त हो जाए। तो फिर हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? अच्छी हो जाएगी। अब तो कंपल्सन है, अब तो कोई चॉइस भी नहीं है। Some of you understand the Gujarati. I was walking in Mulund, yeah, on Netaji Subhas Road, and I met my very old friends from Mulund. That's where I stayed for more than 25 years. And I asked them, Kemcho, means how are you? The response came from the lady, ગુરુજી શું કહીએ, કઈ કહેવાય નહીં ને સેવાય નહીં ને એવી હાલત છે. Okay, what to say? Can't bear, can't talk, and that is the position of the marriage. કઈ કહેવાય નહીં ને કઈ સેવાય નહીં ને એવી હાલત. This is normally true. So people normally will not talk about relationships. Okay. Even best of the best people. So there is something very strange about this dimension of life, what we call it as a dimension of relationships, social dimension. And it seems that because there is a lack of knowledge, lack of skills of managing relationships, lots of issues are there. The most educated people, the most talented people, most well-to-do people are also messing up their personal life. So there is a very big gap in understanding, and that is what we need to correct ourselves. We need to understand few things. We need to focus on this dimension of relationships. We need to go deeper into it. We need to learn this subject systematically. Okay. Otherwise, from 7th of September 2025, we are going to face major issues. And this is world over, okay? Because planets will influence everywhere in the world, not just India. India will face minimum problems, but still our problems will be high because we are not supposed to face that kind of a thing. Our culture is different, but still you will see the divorce rate going up suddenly. Okay, so that's why we have to learn deeper aspect of relationships. Okay, so the first aspect of Prem Bodh you understood. There is a way, and that way is Prem Marg with three components: Prem Kriya, Prem Dhyan, Prem Bodh. So once we have that Prem Bodh, that is the solution to all our relationship issues. Okay. See, initially I decided to create only one group, and that is only for the couples. But then I was wondering whether this knowledge is only for couples. No. The knowledge is for everybody. Anybody who is sincere to learn, the knowledge is for everybody. So we created another group of individuals. That's why it's open to all. Yes, the knowledge wanted by couples is different, knowledge wanted by individuals is different. So certain classes will be only for couples. That's why I have kept the group separate. Certain classes will be only for individuals. That differentiation will happen in the future classes. That's why we have kept two different groups. But both ways, the fundamentals of a Prem Bodh do not change. Okay? Something which is common for everybody, we will discuss in this class. All of us
Because of this crisis situation on the planet Earth, we have to rise above 500 hertz frequency. Okay? This is a scientific statement, my own understanding, which means what? Everybody has to grow in the dimension of love and compassion. That will help us to solve many issues. If all of us we decide, we choose to learn and grow in the dimension of love and compassion, lots of relationship issues will not bother us. Not only that, we will be able to help and guide other people around us who will be facing major crisis. That is why we have got this knowledge, and all of us we can come together and help. Okay. So the first insight of Prem Bodh, how do we do that? See, it's easy to talk, but how do we do it? That's not easy. So as a scientist, I have worked out few basic things. See, something which an individual cannot understand. Something about me I cannot understand because I have my blind spots. When I'm not married, I think that my behavior is perfect. But when I'm married, when I stay with my spouse, my wrong thinking, my wrong emotions, my wrong behavior can create disturbance in the relationship. Okay. So I know my blind spot. I know there is something wrong in my behavior because of my relationships. So other becomes the mirror. We understand because of the other. If the other is not there, we will not understand. So because the other is there in the relationship, we understand there is something wrong with me. Okay. But we always tell something wrong with the other. We don't come to this point that something is wrong with me. This is the beginning of conflict in relationship. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहले तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था। जब से ये शादी किया तब से प्रॉब्लम आ रहे हैं। Which means we start blaming other. And that is the issue. Instead of that, this is the insight of the Prema. Instead of blaming other, if I start looking into my own thinking, my own behavior, and I consider other as a mirror who is giving me a chance to learn and grow and look into my blind spot, if I start correcting my blind spots, my behavior, things will start improving in a big way. Everybody got this first insight from the Prem Bodh? This is genuinely Prem Bodh. Okay. So I will repeat once again. Instead of blaming someone else, if I look into my own patterns and start correcting myself, because now the other has given me the opportunity to understand myself, when I start correcting myself, the things will improve. Is it not? So, how do we grow in the dimension of love and compassion? The first point you got down to earth, nut bolt level. Okay, how to do? Look into yourself. Certain issues are not there. Now the issues are there in the relationship. Relationship has become a mirror. There is something in me which is not okay. So I need to correct. Okay. And I start working on that and I improve. That's how I grow in the dimension of love and compassion. I start correcting
my own behavior, which is based on my thinking patterns, on my attitudes, on my belief system, on my value system, on my subconscious equations, and on my identifications. So when I start doing introspection and look into all these things, I will become a better person. My relationship will improve. This is how I grow in the dimension of love and compassion. So first thing first, blaming other has to stop, introspection has to start, and correction has to be seen by everybody around. That is how I grow in the dimension of love and compassion. Everybody understood this insight? If you are not understood, prem bodh. I told you, difficult to communicate. Okay. So if anything about prem bodh you don't understand, then you can put a question. Piyush Singh says, live about how to handle relationship. Education system inculcate wrong perception about relationship. सही बात है. सही तो कुछ सिखाता नहीं है एजुकेशन सिस्टम, जो सिखाता है गलत होता है. Release from destiny may also be a destiny. Good question, Vinay साहब. नमस्कार. Thank you for that question. वो मैं अभी आपको आंसर देता हूँ because that's a very deep question. It's also answered in Prembodh. There is a Lord Shiva in each one of us. So it is the wish of the Shiva. वैसे देखा तो फिर वो डेस्टिनी हो गया, हमारे हाथ में है ही नहीं. हम कितनी भी मेहनत करें, टोटल रिलीज फ्रॉम द डेस्टिनी, मतलब कि एनलाइटनमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है. So somebody asked me, I want to get enlightened. Guruji, can you help? See the statement. I, capital I, want to get enlightened. Baba, वही तो तकलीफ है. How can I get enlightened? Then second is want. So as long as the wanting is there, how the enlightenment will happen? So I has to go, the wanting has to go. What remains is enlightenment. But this is प्रेम बोध. ये जब बोध होता है भीतर से, see, if you say destiny, let's go a little more deeper into this question. Ask whose destiny? नसीब किसका नसीब? ये नसीब बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म का है. फॉर श्योर जब तक शरीर है तो शरीर का डेस्टिनी रहेगा रहेगा रहेगा. वो तो मृत्यु तक चलेगा, शरीर की डेस्टिनी होगी. माइंड इज पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली, लिटिल सटलर एस्पेक्ट. सो शरीर मन का ढांचा है, बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म, उसकी डेस्टिनी है. लेकिन बहुत बढ़िया इंसाइट मैं आपको बताता हूं. एज वी ग्रो अप इन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहेंगे प्रेम बोध, जो भी व्यक्ति प्रेम बोध के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शन में उसका डेस्टिनी का पकड़ कम कम होते जाएगा. और जो छलांग लगा के बाहर निकल गया तो उसके लिए फिर डेस्टिनी काम नहीं करेगा, शरीर पे काम करेगा. फिजिकल बॉडी का जो है वो तो हो. So 80-20 rule applies. 20% destiny will still work because as long as the body is there, but that compulsion will disappear. So 80% release can happen from destiny by understanding of prem bodh. I'm by doing certain things. I'm telling you, अगर वो प्रेम बोध घटित हुआ तुम्हारे सिस्टम में तो 80% पकड़ जो है डेस्टिनी का वो गायब हो सकता है. 20% रहेगा as long as the body is there. All of you got this thing? That's why we are discussing this subject. Okay.
रिलेशनशिप सुधारने का टिप्स देंगे क्या गुरुजी? ऐसा एक मुझे मैसेज आया। टिप्स नहीं, पूरा सब्जेक्ट ही है ये, यही सीखने वाले हैं। ओके, सो second insight into prem both. See, how do we instantly correct relationship? I'm telling you, all those couples, okay, who are sitting together right now, I'm telling you, you will start creating miracles in your relationships, guaranteed. There is nothing better than this. ये ज्ञान दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, बाबा जी का दिया हुआ, फर्स्ट टाइम दे रहा हूं मैं। मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जो आ रहा है ले लो, कृपा बरस रही है, ले लो। Instant correction in relationship. Every man, every boy, every gentleman should see divine feminine, Jagadamba, Jagat Janni, okay, Mataji, Mother Goddess, divine feminine, that's the right word, in every woman that you meet, including all the ladies, daughter है, sister है, mother है, भाभी है, जो भी है. One of the greatest insight that I understood in Prem Bodh, vibrationally given by Babaji, is every person has to learn to respect the divine feminine in every woman around, every female around, every mother around. That is the right word. इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसा है ना कि ये डीपर इंसाइट्स को बताने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं. एंड एवरी वुमन must learn to respect divine masculine. शिव तत्व हम जिसको बोलते हैं वो डिवाइन मस्क्यूलिन, और हम जिसको शक्ति तत्व कहते हैं वो है डिवाइन फेमिनाइन. ओके, so if every man learn to respect the divine feminine in every woman learn to respect the divine masculine, the Shiva tattva in the man, just by doing this, just by this respect, just by this practice of gratitude, you will suddenly rise up yourself in the dimension of love and compassion, and instant miracles will happen in your relationships. Instant miracles. क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन है ना भैया, बहुत ज्यादा सीखने के लिए समय नहीं है अपने पास, तो अपने को तो इंस्टेंट पे ये सब कुछ, और अभी टाइम भी नहीं है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का. तो ये प्रेम बोध की जो बातें हैं वो मिरेकल्स कर सकती है इंस्टेंटेनियसली. ओके, so if all of us consciously become aware of respecting the divine feminine in every woman around and divine masculine in every man around, divine feminine as mother goddess Jagadamba, divine masculine as Lord Shiva, consciousness, अगर ये बात समझ में आ गई तो इंस्टेंटेनियसली देयर विल बी क्वालिटेटिव शिफ्ट इन योर रिलेशनशिप, गारंटेड. ये पॉइंट में अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछो, पंचित इन चैट बॉक्स, आई आंसर. Prityu says Bollywood also do wrong conditioning about relationships, especially in young people. सोशल मीडिया है, बॉलीवुड है, बहुत सारी कंडीशनिंग्स आती है अपने को आउटसाइड इनपुट से, एंड दैट इज द बिग. टुडे सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ बिग वे. जो लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं, जो फिल्म का जमाना तो गया, अब जमाना है सोशल मीडिया का. So social media is influencing you in a big way right now. Bollywood is gone. Bollywood is out now. But yes, earlier days Bollywood has influenced in a very big way. Anand is saying Rahu effect in relationship is high. Yes, I will come to that. Rahu effect सबसे बड़ा. अभी मैंने आपको बताया कि 7 सितंबर 2025 के बाद में डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. उसका रीजन है राहु इफेक्ट. ओके, नाउ दैट आनंद हैज आस्क्ड,
आई विल गो टू दैट टॉपिक। आई हैव नो एजेंडा, बहुत सारा है, इतना इनफाइनाइट मटेरियल है मेरे पास, जो पूछोगे उसके उसी लाइन पे मैं जाऊंगा। सी व्हाट इज राहु इफेक्ट। राहु distorts our perception. So we start seeing that which is not there, and we don't see clearly that which is there. दोनों साइड्स है, ये राहु इफेक्ट कहते हैं इसको एस्ट्रोलॉजी में। We start imagining something and we strongly believe that my imagination is true. This is called Rahu effect. Okay. Just before coming to United States, ताओ में मैं 4 किस्से का काउंसलिंग किया, कपल काउंसलिंग। All for common factor was Rahu effect. See what happened. I will tell you exact case study so that you understand. Okay. With all the ethics of counseling that confidentiality is maintained, so I never tell the name, but the story is true. और ये अभी अभी की है। Husband starts seeing the mobile phone of wife. जब वो नहीं होती है, थोड़ा फोन मिल गया देख लेता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। Why is she behaving that way? Is she having some love affair? Okay. Doubt. Why she is coming late from the office daily? Where is she going after office? With whom she is traveling? Okay. Why she is not talking to me? Rahu effect. Okay. Either way, no gender bias. This Rahu effect is common either side. And person starts imagining visualization on the wrong sides. And what does Rahu does? Rahu does that whatever I am imagining is true. You are caught into the Rahu effect. Be understood? अब ये 7 सितंबर 2025 के बाद में इसकी वजह से, राहु इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा डाइवोर्सेस होंगे। ओके, I'll tell you one more case, exact case studies. Okay, these are all noted by me in my case study manuals. One lady, 60-year-old lady, came to Tao with her brother. My husband is somewhere in the interior part of Maharashtra having his own business, and he's 65 years old and he's having love affair. Rahu effect I'm describing, exact case, recent case that happened. So I asked her, how do you know? My husband's driver called me and told me that there were 3 girls in the car. So I asked her, is she having love affair with 3 girls? Then there's something interesting. I must meet that man. A 65-year-old man whose business is finished, whose confidence is gone, who is having erectile dysfunction for past 20 years. And if such a man can have 3 love affairs at a time, he must get Bharat Ratna, no? So I must interview that man. All the data came from her only. I didn't know anybody. They are all totally new people. So very confirmed Rahu effect. So I told her, see, this is not possible. Because love affair takes so much of time, so much of money, so much of energy. A person who does not have the energy, it's not easy. टाइम किसके पास है आज?
राहु इफेक्ट बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है लोगों को। तो आई टोल्ड दैट लेडी आई विल हेल्प यू। तुम एक काम करो, तुम्हारा हॉरोस्कोप और प्रश्न कुंडली दोनों बता रहा है कि प्योरली राहु इफेक्ट है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ओके, फिर भी अगर आपको प्रूफ मिले तो आ जाना, आई विल हेल्प यू। वापिस नहीं आए वो, और कोई मैसेज भी नहीं है। 100% राहु इफेक्ट था, प्रश्न कुंडली से समझता है, हॉरोस्कोप देख के समझता है। राहु की दशा में ये सब होते, राहु की महादशा या तो राहु की अंतरदशा चलती होगी तो ऐसे भ्रमित वातावरण निर्मित होता है, और ऐसे किस्से बहुत ही कॉमन है, और इनकी वजह से बहुत सारे डाइवोर्सेस होंगे, लोग हर्ट होंगे। लोगों की इंटेग्रिटी पे अगर कोई बात चलती है, कोई बात करता है, द सेंट्रल पिलर ऑफ ट्रस्ट इज लॉस्ट इन द रिलेशनशिप। अब वो मैडम के भाई ने मुझे बाद में फोन करके बताया कि वो जो 3 लेडीज थी वो हेवी रेन्स था, so sir gave those 3 office girls the lift because he was going to the town and he dropped them। अब ऑफिस कलीग को कार में बैठाना कोई गलत है ना, और कार जा ही रही थी टाउन में और उनको लिफ्ट दिया। वीकेंड था, सैटरडे फ्राइडे इवनिंग था, छुट्टी था, नेक्स्ट 2 दिन गाड़ी जा रही थी, बॉस जा रहा था, ऑफिस की 3 लड़कियों को बैठाया गाड़ी में, गाड़ी खाली थी, आगे ड्राइवर और सर बैठे थे, पीछे 3 लड़कियां बैठी थी और उनको ड्रॉप किया। दैट्स ऑल। बट दिस वाज रॉन्गली रिपोर्टेड बाय ड्राइवर टू द मैडम, एंड दैट वन सेंटेंस बाय द ड्राइवर created the Rahu effect, and it went so high that she had to come to me for counseling. So, as a counselor, I believe in the data, facts. Anything which is not the fact is the Rahu effect. All right, uh, Anand, thank you for posting that. Anybody who has not understood the Rahu effect, or anybody who is facing the Rahu effect, because this will be very high. कलयुग का राजा है राहु, ओके, और कलयुग जा रहा है, तो राजा जाते जाते धक्का मार के जाएगा, और ये धक्का मारना ऑलरेडी राजा का शुरू हो गया। दैत्य है ना राहु, तो डैमेज करता है, लेकिन आसुरी शक्तियां पिक पे जाती है, जब मरने का टाइम आता है ना तो पिक पे जाती है, तो अभी उनका मरने का टाइम आ गया है, तो आसुरी शक्तियां पिक पे है, तो राहु इफेक्ट पिक पे है एकदम। अच्छे अच्छे लोग, हम जिसको हाई अवेयरनेस वाले लोग बोलते हैं ना, वो भी राहु इफेक्ट की झपट में आ जाएंगे, लपेट में आ जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग। ओके, सो एवरीबडी बी केयरफुल। And Rahu effect not just on the love affair, huh? That is the example that I give you because 4 people came. See, रस्सी है लेकिन आपको सांप लग रहा है, ये भी राहु इफेक्ट है। जो नहीं है वो दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो राहु इफेक्ट। ओके, सो राहु इफेक्ट जीवन में बहुत सारा तकलीफ देता है, और राहु इफेक्ट मल्टीपल रोल में आता है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट। आई गॉट 10 मोर मिनट्स, 90 मिनट्स का मीटिंग है, माल इतना सारा है, क्वेश्चंस इतने सारे हैं, समझ पैदा होनी चाहिए। ओके, दिस थिंग्स विल कंटिन्यू, 10 मिनट है, आई चेक द क्वेश्चंस। इज शिव तत्व एंड देवी तत्व एंड एवरी इंडिविजुअल इन सम वे? 100%, 100%, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ड्राइवर्स एंड ड्राइविंग इज अ सिग्निफिकेशन ऑफ राहु, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। यस, Guruji, can we apply Prem-Bodh principle to sibling relationship as well, especially when sibling is at odds with you and parent? 100%. Any relationship, it is applicable. Any relationships. Okay. See, एक भाई आता है, छोटा भाई, उसके 2 बड़े भाई है,
छोटा भाई अलग रहता है शादी के बाद में, दो बड़े भाई जो है वो अलग है, तीनों मतलब ऑल द थ्री ब्रदर्स आर सेपरेटली स्टेइंग। छोटा भाई आके बताता है कि मेरे दो बड़े भाई जो है वो मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हड़प करने वाले हैं और मेरे नाम पे कुछ नहीं होने वाला। अब ये राहु इफेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है, यू सी, ये जो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे भाई लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हड़प कर जाएंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे, इसको राहु इफेक्ट कहते हैं। So Rahu effect is valid in all possible situations. It's not just the love affair. Okay. But if your spouse is checking your phone, the Rahu effect has started. खतरनाक बातें हैं भैया, मैं तो काउंसलर हूं, समाज की नस जानता हूं, रोज की जैसे एनर्जी शिफ्ट होती है तो क्या होता है, कितने सारे किस्से आते हैं मेरे पास। दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि ये सब हो रहा है और सितंबर में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। Yasmin is asking, if a person is too much abusive, how can we respect them? You are not respecting that person, individual. I told you the insight of the Prem Bodh. You start respecting the divine feminine and the divine masculine, irrespective of the person. वो तो शिव और शक्ति तत्व है, उस तत्व को तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। इतना करेंगे तो भी मिरेकल होगा, इतना करेंगे तो भी मिरेकल होगा, बिकॉज दैट sense of respect will enter into your consciousness. That will do miracle for sure. All right. So all your questions answered. How much time we have? Okay, 10 more minutes. So now I will tell you something very miraculous. Okay. And next time we'll continue from there. See, there is something called धुआं, smoke. वो राहु है, धुआं यानी राहु, धुंधला. And there is something called fire, आग. We have this concept in couple counseling. Okay, all of you who want to learn couple counseling, 7 people have already registered verbally. They are on the list. Few more getting ready. कपल काउंसलिंग यहां से शुरुआत होती है। ओके, प्रोफेशनल कपल काउंसलिंग जब हम सिखाएंगे लोगों को, जो भी सीखना चाहता है, वेलकम। फर्स्ट लेसन, and this is a wonderful insight of Vedanta also and Prem Bodh also. We call it as a fire and smoke principle in couple counseling. ये आपको एक एनालॉजी है जिससे आपको समझ में आ जाएगी बातें। फायर एंड स्मोक प्रिंसिपल। अब जहां पर भी आग होती है वहां पर धुआं होता है, और अगर धुआं है तो डेफिनेटली आग है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। हाँ, आग लगी नहीं है, आग लगने वाली है। जब आग लगने वाली होती है तब धुआं ज्यादा होता है, आग पूरी लग जाती है तो धुएं कम हो जाते हैं, आपको मालूम है। लेकिन आग और धुआं दोनों साथ में ही होंगे, अलग नहीं हो सकते। धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं है, दोनों रहेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फायर एंड स्मोक, आग और धुआं का प्रिंसिपल है। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, बहुत पुरानी है, मतलब कि करीबन 25 साल पुरानी है। 30 साल से मैं कपल काउंसलिंग कर रहा हूं। फर्स्ट 10 years was like a practice time for me. लास्ट 20 years प्रोफेशनली चार्ज लेता हूं मैं, पहले मैं फ्री में करता था, ओके, एज अ हॉबी करता था। बट आई टुक आउट माई केस स्टडीज एंड ऑल। आई हैव record of 32 years of counseling, couple counseling, 32 years. ओके, हम लोग वसंत विहार में रहने गए थे, कल्याणी का जन्म जस्ट हुआ था, उस टाइम पे मैंने 4 जन का केस स्टडी लिख के रखा है मेरे पास। नाउ कल्याणी इज अ मदर, सो 36 years हो गए कपल काउंसलिंग करते करते। सो थाउजेंड्स ऑफ कपल्स का केस स्टडी है। I will tell you one typical case study. It's about 25 years old. The couple came from Delhi, और
बहुत बड़ा झगड़ा. It went to divorce. Okay. So before the divorce, they came to me and they took a flight from Delhi, both of them, and came to our home. Okay. For the counseling. तो मैं बोला कौन सी बात पे तकलीफ है आप लोगों को? तो मैडम से the way he presses the toothpaste from the top, it irritates me. He should press the toothpaste from the bottom. This is called smoke in the couple counseling. Okay. So I told, if it is only that, okay, उस जमाने में कॉलगेट टूथपेस्ट कुछ 10-20 रुपए में आती थी ना, आज भी 50-100 रुपया होगा और कितना होगा. तो मैंने उनको बोला कि इफ दैट इरिटेट्स यू, देयर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. फ्लाइट का भाड़ा खर्चा और इतना आने की जरूरत नहीं थी. एक 50 रुपये की 2 टूथपेस्ट ले लो, एक हस्बैंड की एक वाइफ की, उसको नीचे से निकालना है, ऊपर से निकाला है, फाड़ के निकालना है, टूथपेस्ट जैसे निकालना निकाले, यू डोंट बॉदर, प्रॉब्लम सॉल्व. 50 रुपये का सॉल्यूशन. बट यू सी, when somebody says I have a problem, no, this is not the fire, this is the smoke. इसको सिम्टम कहते हैं, इसको रूट कॉज नहीं कहते हैं. ओके. मैं बोला ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, और कुछ होगा? हाँ, मेरा हस्बैंड है ना, बाथरूम में से निकल के गीला टॉवेल पलंग पे डालता है, दैट इरिटेट्स मी. अनदर स्मोक. तो मैंने हस्बैंड को बोला कि टॉवेल इधर उधर डालने का नहीं, विंडो में से बाहर फेंक देने, गरीब आदमी लेके जाएगा. इंडिया है भाई, है ना? रोज अगर एक टॉवेल फेंक देगा ना तो भी परोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया, देख भैया तू बड़ा बिजनेसमैन है, तेरी प्रॉपर्टी बहुत है, 5 करोड़ का तू मालिक है, अगर डाइवोर्स हुआ तो 2.5 करोड़ तेरी वाइफ लेके जाएगी. बोल, टॉवेल फेंकना परोड़ेगा? बोले बिल्कुल परोड़ेगा. यू अंडरस्टूड? तो ये टूथपेस्ट बराबर नहीं यूज करता है, ये टॉवेल पलंग पे डालता है, इसको हम स्मोक कहते हैं. स्मोक. दिस इज नॉट द फायर. सो इन कपल काउंसलिंग वी ऑलवेज लुक एट द फायर, नॉट एट द स्मोक. ये सिम्टम लेवल की बात है. देर इज समथिंग एल्स विच इज बॉदरिंग द कपल एंड बोथ ऑफ देम वर डिस्टर्ब. नहीं तो इतना खर्चा करके कोई टॉवेल के लिए, टूथपेस्ट के लिए थोड़ी कोई दिल्ली से बॉम्बे आएगा टाइम निकाल के. बिजी पीपल, रिच पीपल. So whenever such issues come, we have to separate the smoke from the fire. ये fundamental है couple counseling का, professional couple counseling. So what people are talking about and what is underneath, there is a totally different thing. Couple counseling always starts with the smoke. Counselor is looking for the fire. Actual issue कहाँ है भाई? जो actual issue है, root cause है, उसको fire कहते हैं. और ये जो symptoms है, उसको धुआं कहते हैं. If somebody is checking the mobile phone of the partner, is a symptom. डाउट आ गया. रूट कॉज क्या है? ट्रस्ट चला गया. दैट इज द फायर. क्यों हुआ? हो सकता राहु इफेक्ट हो. हकीकत कुछ भी ना हो. हकीकत कुछ भी ना हो. राहु इफेक्ट. गेटिंग इट? सो एनी टाइम यू एक्सपीरियंस एन इश्यू, मे बी अ माइनर इरिटेशन, तू में भी हो गया, बातचीत हो गई, look at the what is the smoke and what is the fire. Where is the real issue? What is the root cause? Okay. So ये बहुत लंबा चलेगा, फायर एंड स्मोक वाला. बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझ में आएगी. वी जस्ट स्टार्टेड, विल हैव टू एंड नाउ. एक होमवर्क है सभी के लिए. ओके. वो होमवर्क ऐसा है कि प्रेम बोध की तो बातें आएगी बीच में. अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो
ज्यादा अच्छा रहेगा. समथिंग, व्हाट इज साइंटिफिक तरीका? समथिंग दैट इज क्वांटिफाइबल. So suppose there are four couples in front of me. Hmm? Which relationship is better? How much better? है ना? अभी इसको मेजर कैसे करेंगे? तो ऐसा कोई किलो का या तो लीटर के जैसा तो है नहीं कि मेरा पति मुझसे 5 किलो प्यार करता है और मेरी नेबर का पति उससे 10 किलो प्यार करते हैं. ऐसा तो कोई अपने पास मेजरमेंट की बात नहीं है ना? मीटर भी नहीं है, लीटर भी नहीं है, तो मेजर कैसे करेंगे रिलेशनशिप को? यू गॉट इट? और क्योंकि मेजर नहीं करेंगे तो फिर बड़ा कि घटा समझेगा कैसे? See, many ladies have complained to me in counseling, with husband or without husband. वो है ना, अब पहले के जैसे नहीं रहे. अरे भैया, एवरीबडी इज चेंजिंग, सिचुएशन इज चेंजिंग, स्टार्स आर चेंजिंग, प्लैनेट्स आर चेंजिंग. पहले के जैसे कैसे रहेंगे? तुमने ही कुटाई पिटाई कर करके इतना बदलने की कोशिश की है. To certain extent you have succeeded. How can he be the same person? इतनी पिटाई करते हैं ट्रेनिंग दे दे के, है ना? तो पहले के जैसा कैसे रहेगा? इतना मार सहन करके कुछ तो चेंजेस आएगा ही ना. सो नोबडी विल बी लाइक द ओल्ड डेज. व्हाई आर यू कंप्लेनिंग नाउ? Life is changing, relationships are changing, stars are rotating, everything is changing. So don't expect that I married my spouse 20 years back and she or he should be the same. No, everybody is changing. सेम नहीं हो सकता भाई. परिवर्तन संसार का नियम है. ओके. लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि प्यार कम हो गया. तो ये क्यों लगता है ऐसा? पहले 10 किलो करता था, अभी 5 किलो करता है. अब मेजरमेंट नहीं है तो समझेगा कैसे? तो साइंटिफिकली हाउ डू वी मेजर द रिलेशनशिप्स? See, one of my specialty as a scientist is the creation of the skills, and my skills are patented. My happiness scales are used by many people now. My SQ scales are used by many people. Similarly, जैसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन को कैसे मेजर करने का लोगों को मालूम ही नहीं है. हमने क्रिएट किया. ओके. हैप्पीनेस क्वेश्चन को कैसे मेजर करने का अब तो स्टैंडर्ड हो गई है स्किल्स. वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेशनशिप क्वेश्चन. ओके. और आप 5 मिनट में मेजर करोगे. तो व्हाट इज द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप नाउ? You will record. Okay, that's your homework. I will give you the scale that I have created. You will record. You can use the scale for every relationship. समझो एक एक्सरसाइज किया फादर के लिए, एक किया मदर के लिए, एक ब्रदर के लिए, एक सिस्टर के लिए, एक वाइफ के लिए, एक डॉटर के लिए, सन के लिए. You can use as many times as you want. So whatever relationships are there around which you consider as important relationships, तो उनके लिए आप वो स्केल मेजर वापरो. सोचो जो क्राइटेरिया है और कितना पॉइंट हुआ. मैक्सिमम आपके 100 पॉइंट्स हो सकते हैं. 10x10 मैट्रिक्स अगर है तो 10x7 है तो मैक्सिमम 70 पॉइंट्स होंगे. ओके. सो 0 to 10 के स्केल पे आपको आपका रिलेशनशिप जो है उसको मेजरमेंट करना है एज पर योर परसेप्शन. ओके. सो सपोज इफ यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. ओके. So husband and wife relationship pursued by husband may get 70% marks. Same husband and wife relationship pursued by wife may get 40% marks, and this is fine because everybody's perception is different. Whatever is your perception is your perception. ठीक है? Everybody understood this thing? So it's not absolute, it is relative. And relative according to your perception. And then how much it is changing.
that we will record. तो अभी समझो 10 सेशन हो गए अपने प्रेम बोध के, उसके बाद में आपकी रिलेशनशिप में क्या क्वालिटेटिव चेंज आया, ये हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट से पता चलाएंगे कि हकीकत में कितना फायदा हुआ। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच। तो प्रेम बोध के ऊपर हम साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। ओके, तो जो आपकी रिलेशनशिप की जो हेल्थ है उसका जो स्केल है मैं दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आपको वो एक्सरसाइज करो। ओके, एंड यू हैव टू टेल मी, मे बी अभी कैसे हवा में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे। वी आर गोइंग टू सेपरेट द फायर फ्रॉम द स्मोक, दैट इज द मेन थिंग। जैसे वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अगली बार आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने शुरुआत की है, आग का आग और धुएं का धुआं हो गया, instantly relationship will take a quantum jump, exponential improvement in your relationships guaranteed with this. Okay, और फिर जो निटिग्रिटी है, छोटे मोटे इश्यूज है, वो क्राइटेरिया डिफाइन किया हमने, उसके ऊपर बात करेंगे। सडनली यू विल सी क्वांटिफाइबल चेंज, क्वालिटेटिव चेंज इन रिलेशनशिप्स। ओके, तो क्वांटिफिकेशन सभी को करना है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। कितना बजा? हो गया टाइम? हो गया, मोर देन दैट। विल डू शांति पाठ। क्या होता है, कि भाई हम सभी को बाबा जी की कृपा हो जाए, हमको बातें समझ में आ जाए और हम लोग झगड़ा न करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम द्वेष न करें आपस में, हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ सीखें, हम पढ़ाई करें, हम आगे बढ़ें। ये टेम्परामेंट, ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड लेके चलना है। ओके, तो आई विल स्विच ऑफ फ्रॉम माय साइड एंड गुरुमा विल डू द शांति पाठ। Wonderful insights about the radiant relationships. You and me and you. That is the whole play of Maya. And always I am right, you are wrong. That is a Rahu. So this is how the things in the relationship get complicated. Gurudev Amarjyoti ji ne, in his poem, he has written 2 lines in Hindi. जगत को मैं तेरा परिवार समझू, परिवार को मैं तेरा उपकार समझू. You've given this entire Vasudhaiva Kutumbakam, this entire world as the mirror to me, so that I can see myself into every other being that I consider as other. Once I start seeing myself in everyone, the other no more remains. That is the state of oneness. That is the state of prema. If we can get into that state, then all the problems get resolved. Masters have wonderfully given the tools. कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम गली अति साखरी, તમે દો ના સમાય. जब हरि था मैं नाही, अब हरि आवे. तो हरि जब आ जाता है तब हम निकल जाते हैं, और हम अगर रहने की कोशिश करेंगे तो हरि को आने को जगह नहीं बचती है. So let the divine dawn into all of us and let the other disappear and let there be only one seen everywhere. This is the deepest message masters want to convey. So consider that we are in this world interacting with as many people. We are fortunate to have those many mirrors so that we can correct ourselves faster. And be grateful to all of them. And look within, look yourself in others. If the beginning of this has happened today with a session of Prema Bodh, we have started implementing Babaji's teachings.
Guruji's efforts will fructify if that begins today. Let this understanding radiate to the whole universe and let the whole globe become one family, one loving family. Vasudhaiva Kutumbakam. Om Sarvesham Swastirbhavatu Sarvesham Shantirbhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति Shanti. Let there be peace and joy all over the world, in everyone's life, all the time. Sarvato Bhadra. Thank you.